Good morning students, I welcome you all to the online classes of SGOI. In the computer class today we will be starting the new chapter, that is chapter number 5, an introduction to programming in Java. So before starting this chapter, we can say that before I would tell you what is programming or what is Java. First of all, we should learn how we have came across the necessity of this programming language. Okay. In our last class, we have already understood or we have already studied that what are algorithms and what are flowcharts. So, algorithm is the step-by-step planning and the writing of the situations and the solution of that problem. Okay. Then flowchart is the representation of those algorithms one by one. Okay. Now, first of all, we have written the algorithm and we have also written the flowchart. But now the question arises कि हम अब वो कंप्यूटर को कैसे समझाएं. For example, हमको समझने के लिए we have two languages normally, that is English or Hindi. If someone is speaking Hindi or that person is speaking English, then we can easily understand that what that person is trying to tell. But computer does not understand these languages. The computer does not understand either English or Hindi or any other languages. Computer understand a very different language which is known as programming language. So from here we can clearly tell that programming language is a language which is understood by the computer. Okay, so I hope you have understood what is programming language. In that process we can really tell many examples of those programming languages. They are like C, C++, C++, Java, COBOL, Fortran, Pascal, PHP, etc. All these are the computer languages. Okay. Now, in this chapter, we will be learning only one language, or we can say we will be starting to learn only one language, and that is Java. Okay. So let's see what is programming. A programming is a 5-step process that involves identifying the problem, designing, coding, testing, and debugging. So I hope इन सभी प्रोसेस का आपको मतलब समझ में आ गया होगा. शायद डीबगिंग का मतलब नहीं पता होगा. डीबगिंग का मतलब होता है जब भी प्रोग्राम आप बना के तैयार कर देते हो, whenever the program is being created, then it might have some errors because we are not perfect. कोई भी perfect नहीं होता. तो अभी जब भी आप एक प्रोग्राम लिखते हो, उसके बाद फाइनली आप देखते हो उसमें कि शायद कुछ ना कुछ एरर रह गई हो, तो उस एरर को आइडेंटिफाई करने के प्रोसेस को ही हम debugging बोलते हैं. Identify and then fix the problem, or you could say the process of identifying and then fixing up the error in the program is known as debugging. Okay. So all these 5 steps have been elaborated. They are saying identify the problem means figuring out what is you are typing to solve, or you could say what you are trying to solve. Next is designing means presenting the program in a user friendly way. What does user friendly means? User friendly means the kind of program which could be understood by the users. Normal example से हम समझते हैं. For example, if somebody asks me, please give your introduction. So introduction जो होगा वो मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा ताकि सामने वाले को इजीली समझ में आए. ऐसा नहीं करूंगा कि मैं बहुत हाई फाई वर्ड्स, रिच वोकैबुलरी वाले वर्ड्स यूज करूं ताकि सामने वाले को समझ में ही ना आए कि मैं क्या बोल रहा हूं. इसीलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम्स की उस तरह की लैंग्वेज को यूज किया जाता है जिससे कि सामने वाले यूजर को इजीली समझ में आए कि व्हाट द कोड इज ट्राइंग टू एक्चुअली टेल. देयरफॉर वी कैन क्लियरली से दैट अ प्रोग्राम शुड बी user friendly word simply signifies that program should be very feasible, understandable, and in very normal language. Okay, now let's move to third part is coding means writing program instructions. Coding word का मतलब क्या होता है? जब भी हम लोग प्रोग्राम के instructions लिखते हैं, that is known as coding, and this coding will be understood by us in our further classes कि coding करते कैसे. Okay, now टेस्टिंग मींस हम लोग टेस्ट करेंगे प्रोग्राम को कि वो प्रोग्राम वो सही रिजल्ट्स दे रहा है कि नहीं, जिसके लिए वी हैव डिजाइन्ड दैट प्रोग्राम. ओके, एंड लास्ट वन इज डीबगिंग. एंड डीबगिंग क्या होता है मैंने आपको बता दिया.
Debugging means finding and correcting errors if any. If any means अगर कोई errors है तो उसको find करना है और correct करना है. This process is known as debugging. Okay. Now, in general programming is required for the following purposes. हम लोग को प्रोग्रामिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? First of all, it is saying to allot the respective tasks to the computer for quick processing. Second one is to automate time-consuming and error-prone tasks. And third one is to find correct solution for the problems. Okay, these are the basic requirements why we have started programming the codes. Okay. Now, while we are learning about programming and we are learning about Java, into that process the first thing is BlueJ, है ना, जो हम लोग Java लिखते हैं प्रोग्राम या कुछ भी उसके बारे में स्टार्ट करते हैं वो किस प्लेटफॉर्म में करते हैं? इन BlueJ. कितनी देर का हो गया? अब BlueJ ने तो बात दी थी क्या? अभी भी पहुँच नहीं, ये पूरा बेकार हो गया वीडियो तुम्हारा. आपको ये पता नहीं यहाँ क्यों आ जाता. Moving further, introduction to Java and BlueJ. So we all are very much aware that the Java programs in today's world, or you could say in today's life, are written in a platform or a system or application that is called BlueJ, है ना. BlueJ के अंदर ही हम Java programs को लिखते हैं. Okay, तो Java, a simple and powerful programming language, was developed by James Gosling. It was developed by James Gosling in 1995. Okay, at Sun Microsystems in 1995. Okay, now Java is one of the most popular or powerful programming languages. Java enables us to make programs that allows us to play online games, videos, audio, chat with people around the world, use educational applications and do online shopping. All these kind of things are including Java language behind them. और ये सब चीजें करने के लिए कौन सी लैंग्वेज का हम लोग यूज कर रहे हैं? Java प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं. Its syntax is similar to C and C++. That means we can say that इसका जो कोड लिखने का तरीका होता है वो काफी हद तक सिमिलर होता है C और C++ लैंग्वेज के लिए. ओके, Java is widely used because it is a platform independent language. Platform independent language का मतलब क्या होता है? That means you can write Java program in any operating system, whether it could be Windows or it could be the kind of operating system given in MacBooks और Apple laptops, है ना. तो आप कहीं भी लिख सकते हो उस प्रोग्राम को और उसको वहां से यूज करके किसी भी प्लेटफॉर्म में रन करा सकते हो. Therefore, Java code is also known as WORA, WORA. That means write once, run anywhere, है ना. एक बार लिखिए प्रोग्राम को और उसको कितनी बार भी कहीं भी रन कराइए. Therefore, Java code को ये हम लोग बोलते हैं, WORA बोलते हैं. ठीक है, चलिए. Now, next thing is writing a simple Java program in BlueJ. BlueJ में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक सिंपल सा जावा प्रोग्राम लिखना. तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लिक ऑन द BlueJ आइकन प्रेजेंट ऑन द डेस्कटॉप. द BlueJ वर्किंग एनवायरनमेंट विंडोज विल अपीयर. BlueJ में प्रोग्राम लिखने के लिए सबसे पहले क्या करोगे? आप BlueJ के आइकन में क्लिक करोगे, which is like a bird, है ना. एक बर्ड के फेस की तरह होता है. You will be clicking on that icon and the BlueJ application will be open and you can write the program into that application. Okay, next one is click on the project menu. जब एक बार एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? You will be clicking on the project menu. उसका प्रोजेक्ट का कुछ ना कुछ नाम डालने के लिए आप क्या करोगे? न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक करेंगे. ओके, नेक्स्ट स्टेप इज द न्यू प्रोजेक्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर्स. Enter the name of the project in the name box and press OK button. Whenever you will be clicking on the project, then you are starting a new project. Therefore, you will be clicking on the new project button, and then from new project you will be typing the name of the new project, and then you will be clicking on the OK button. Moving further, a new window appears. Click on the new class button. जब एक नया विंडो खुलेगा प्रोजेक्ट का, उसमें आप क्लिक करोगे किसमें? न्यू क्लास बटन पे. Then after clicking on the new class button, a new class name
in the create new class dialog box and click on the OK। नॉर्मल सी बात है कि अगर आपने न्यू क्लास में क्लिक किया है तो आपको फिर से क्लास का नेम देना होगा और उसके बाद you will be clicking on the OK button। Okay, moving further, a new icon of class will appear, double click on the class and your program window will be opening, है ना। जैसे ही आप उस क्लास में क्लिक करोगे, नाम देने के बाद एक नई क्लास बन के आएगी, जिस नाम से आपने उस क्लास को क्रिएट किया होगा। नाउ यू कैन डबल क्लिक ऑन दैट क्लास, तो आपका वो विंडो ओपन हो जाएगा जहां पे आप कोडिंग कर सकते हो। यू कैन राइट द प्रोग्राम ऑन दैट। ओके, इन दैट विंडो a sample program would have been given to you। वहां पे उसके अंदर एक आपको सैंपल प्रोग्राम गिवन होगा। रिप्लेस दैट सैंपल प्रोग्राम, कैसे रिप्लेस करेंगे? कंट्रोल ए करेंगे तो सेलेक्ट हो जाएगा पूरा, देन बैक स्पेस दबाएंगे तो पूरा जो स्क्रीन है वो क्लियर हो जाएगी। नाउ आप क्या कर सकते हो, सिंपली उसमें अपना कोड क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो दैट इज ऑल इन टुडेस क्लास। वी हैव लर्नड why we require programming language, we are working on Java languages, how we create a new project and new class, and how we start programming into BlueJ environment. In our next class we will be studying the compilation and execution of program. Thank you.